Hello. जी लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन, तो आप फिर अपनी वो कंटिन्यू कर लें। जी प्लीज। Yes, and both sides of the mandibular teeth, there seems certain radiopacity, which seems that the crowns or restorations have been placed. ठीक। And I think missed in the first line of the Campbell line, that is the left side of the FZ. I see some separation over there as well. ठीक, पॉसिबली हो भी सकता है। ऑल राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट डोलन लाइंस? डोलन लाइंस भी बता दें। Dolan's lines that start from the right. Okay, coming to the right side, first line, superior orbital rim, and then lateral side of the orbit, lateral wall of the orbit, and inferior border of the orbit. So on the lateral. line 3 पे क्या नजर आ Okay, रहा है? there is a radiolucent line on the right FZ. अच्छा, FZ वाली कौन सी लाइन है? Sir, it's one orbital line. नहीं, लाइन का नंबर क्या है ये पूछ रहा हूँ। Line number 1. लाइन नंबर 1, अच्छा। Just medial to the line first 1 box. is हाँ, line 1 Yes, this ऑर्बिट one. होता है, ठीक है। Orbital What line. about line 3, line 2, line 4? Yes, sir. जी, 1 में आप कह रहे हैं कि यहाँ स्टेप है, FZ पर भी है, inferior border, and also at the inferior orbital rim. Line 1. ठीक है, fine. All right. And on the other side, and on the left side, orbital line, line number 1, there I suspect a radiolucent line in the FZ region, and the inferior orbital rim seems to be normal. ठीक। Coming to the second line on the right side, again, again the FZ comes. Some problem in the zygomatic arch. G. And there also a radiolucent line in the zygomatic arch on the right side. And the left, and coming to the left side, line number 2, the FZ separation is there, but no problem in the zygomatic arch region. Okay, very nice. And coming to the line number 3, the inferior border of the zygomatic arch seems to be normal. Coming to the lateral wall of the sinus is also normal. On the right and side? On the right side. Are you sure? कि यहाँ antrum में कुछ नहीं है? दोनों साइड zygomatic arch, सर अगर zygomatic arch नीचे है तो antrum, हाँ सर, in the lower side the zygomatic arch नीचे असल में आ गई है. Yes, sir. There is a fracture line, radiolucent line in the left side of the, on the right side of the maxillary sinus, lateral wall. जी. Yeah, there seems to be a radiolucent line. And coming to the left side of the lateral wall seems to be normal. And what about line 4? And line 4, the lateral wall of the nasal cavity. It seems to be normal to me. I cannot appreciate any fracture line. ठीक। Yeah. सही है, वेरी नाइस। बस सिर्फ ये लाइन 3 पे आपने ये फ्रैक्चर नहीं पिक किया था। इसको देख रहे हैं, दोनों साइनसेस को आप कंपेयर कर लें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता कि नहीं यहाँ इशू है ना। ठीक है, देख लें यहाँ आपको कितनी एक वेल डिफाइंड स्क्लेरोटिक सा वो लैटरल मार्जिन ऑफ ऑर्बिट या बटरस मिल रही है ना, लेकिन आपको वो चीज जो है यहाँ नहीं मिल रही। ठीक है ना, सो वेरी नाइस। इसके अलावा माशाल्लाह यू कवर्ड एब्सोल्युटली एवरीथिंग, सो गुड जॉब। थैंक यू। अच्छा, चलें अब आते हैं टुवर्ड्स इस वाले पे किया जाए, इस वाले पे कर लेते हैं। अच्छा चलें, नेक्स्ट हमारे पास कौन है? नेक्स्ट वी हैव, लेट्स सी अगर नोमान इज बैक। जी नोमान, आर यू विद अस?
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस लेक्चर पे कमेंट कर लें प्लीज। Sir, this is an X-ray of the PFS of the patient whose name and date of exposure is not mentioned. अच्छा, तो मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी Hello? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। Sir, sir, coming to Campbell line 1, I can appreciate a radiolucent line at the right FC ठीक, and left FC as well, sir. ठीक। लाइन And वाइज चलते हैं ना, sorry sir, लाइन वाइज बता देना कि लाइन 1 पे आपको क्या नजर आ रहा है, लाइन 2, line 1 पे जी। sir, a radiolucent line अच्छा, क्वेश्चन भी आया है आपके लिए कि ये पीए फेस है, ये स्कल है या ये वो है पीएनएस है। Sorry sir, this is basically PNS view of the face, sir. पीएनएस व्यू है ना, दिस इज बेसिकली Yes, sir. OM37 वाटर्स व्यू है, No, M37 view, water's view. नॉट अ पीए फेस। अच्छा, Yes, sir. तो Water's view. चलें बताएं कि लाइन And sir, नजर आ रहा है। and the other thing is, I can appreciate a fracture at the right zygomatic arch, a radiolucent line at the right zygomatic arch. ठीक, So this one I can. what else do you see? Sir, I can see further the. So the zygomatic, there is also a radiolucent line on the right side, just below the zygomatic arch. I can showing the fracture of the right zygoma just below the at the line 3. Line 3 about the just above the coronoid, just above the coronoid. Yeah, this one. ये This one, sir. अच्छा, तो ये Yes, कौन sir. सी लाइन है ये? So just lateral to the sinus, and sir, it portrays a zygomatic arch fracture. ठीक, लाइन 2 पे यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, लाइन 2 Yes, में sir. और Yes, sir. कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? सर एफ लाइन 2 में सर आप there is the right sinus is not as क्या कहते हैं सर इसको, as symmetrical as the left one. ठीक, तो मतलब आप साइनस में भी कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं? Yes sir, sinus में सर मैं भी fluid accumulation suspect कर रहा हूँ, maybe. अच्छा, और But I would sir, dentition level shows multiple restorations, अच्छा, but I would better to comment on that when I have an OPG. ठीक, सही। व्हाट अबाउट लाइन 4, 5 एंड डोलन लाइन, उसको भी बता दें।
Sir, I would like you to guide, sir, because I cannot. अच्छा चलें, लाइन 1 पे आपने कहा कि FZ पे है, तो आप कह देते and Yes, sir. sample line 1 I can only appreciate radiolucent line, Right, FZ. right Radiolucent FZ line, area. yes, The rest of line 1 appears to be normal. ठीक है. Line 2 में starting from the zygomatic arch I can appreciate a fracture, a radiolucent line in the mid of the zygomatic arch. Continuing that line anteriorly, I can also appreciate a step or a radiolucent line at the infra. But the rest of the line 2 appears to be normal. Okay. Coming to line 3. Sorry? No, sir, this is. Achha. Coming to the rest of line 3, I can appreciate the mandibular condyle somewhat. Dr. Noman, आपकी background में काफी noise आ रही है, so I'll have to mute you. चलें. Okay, so coming to the condyle, I can appreciate the condyle and the coronoid as a part of line 3. However, coming to the lateral wall of the antrum, I can appreciate a step deformity or a radiolucent line in the lateral wall of the antrum, along with possible filling of the right maxillary sinus, as it appears to be far more radiopaque than the contralateral sinus over here. And the rest of the line 3 appears to be normal. Line 4 appears to be absolutely normal, and line 5 also appears to be absolutely normal. Coming to the Dolan lines, starting from the first line, well, the orbit does not appear to be extremely clear in this case. However, I can still appreciate the fractures that I noted in line 1 and line 2 at the FZ and the infraorbital area. This is for line number 1. For line number 2, again, a step deformity on the outer cortex of the FZ. In addition, I can also appreciate a step deformity going through the body of the zygoma. आप लोगों को ये fracture line नजर आ रही है? This one that I'm drawing with my cursor. So there's a fracture line going through the body of the zygoma here as well. All right, and coming downwards to complete the rest of line 2, there's a step deformity in the zygomatico-temporal suture here as well. ठीक है. एक क्वेश्चन है फॉर कंडाइल और कॉरोनॉइड का आउटलाइन मैं दे दूं. अच्छा, कंडाइल को अगर आप कॉरोनॉइड तो ये है, इफ यू गाइस कैन मेक दिस आउट. यहाँ थोड़ी पता नहीं किस स्ट्रक्चर की सुपर इम्पोजिशन हुई है, पता नहीं ये क्या है एग्जैक्टली, बट दिस इज द कॉरोनॉइड ओवर हियर. ठीक है, एंड कंडाइल जो है possibly it's this. Again, I'm not very sure, but it's possibly over here. This is the condyle. यहाँ शायद फिर भी निस्बतन क्लियर है. यहाँ अगर आप देख लें, मेरे कर्सर को फॉलो कर लें, तो यहाँ ये कॉरोनॉइड है, and this is the sigmoid notch over here, and this is the condyle over here. ठीक है, तो राइट साइड पे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा क्लियर नहीं है. ओके, सो लाइन 2 भी हो गई. लाइन 3 में अगेन आप वही फ्रैक्चर को दोबारा नोट कर लोगे जो zygomatic-temporal suture में है and lateral wall of antrum में मौजूद है over here. So this completes your line 3, and line 4 में the lateral border of the nasal cavity appears to be intact, so no fracture that can be seen on line 4. All right. Okay, chalo. I think इस तरह करते हैं कि these aren't very clear exercises. चलें, I think इससे hopefully आप लोगों की OM views की practice होगी with the Dolan and Jacobi's lines. तो बाकी एक्सरेज are not of very good quality, तो उस पर interpretation वैसी मुश्किल हो जाएगी. So anyhow, let's come to pathology description. Okay,
सो पैथोलॉजी डिस्क्रिप्शन में फिर इस तरह करते हैं कि हमारे पास कौन है. Okay, let's come to you. Dr. Sonia, are you with us? Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Acha, please describe what you see on this OPG. सर मैंने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. अगर आपने ओपीजी की डिस्क्रिप्शन पहले दी है तो मैंने वो सुनी नहीं है वैसे, क्योंकि मैं ऐसे खैर, ट्राई करती हूँ. बिल्कुल वैसे ही ट्राई कर लें, कोई बात नहीं. Sir, I can appreciate on the left side of the body of the mandible, there is an appreciated mixed radio opaque radiolucent lesion extending. I think there is an in the midline. I couldn't appreciate it, and going laterally, there is a mixed radio opaque radiolucent lesion involving the canine to premolars and also extending posteriorly to extraction sockets of 6-7, and Sure. also involving the lower border of the mandible. Mm-hmm. Oh, sir. There is no displacement of teeth, and it is causing absorption of the canine root. Sure. वैसे इतनी अच्छी नहीं है. सर पैथोलॉजी की एक्सटेंशन तो यही अभी नजर आ रही है, इसके अलावा तो पैथोलॉजी को डिस्क्राइब करना है, इसकी डेंसिटी आपको कैसे नजर आ रही है, बॉर्डर्स कैसे लग रहे हैं, इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर्स. कॉटन वूल अपीयरेंस भी सर उस तरह की एक अपीयरेंस है इसकी. अच्छा, नहीं डेंसिटी बता दें. इज इट रेडियोपेक है, रेडियोलूसेंट है, होमोजेनसली रेडियोपेक, हेटेरोजेनस मिक्स्ड है, क्या है? हेटेरोजेनस मिक्स्ड है सर, मिक्स्ड रेडियोपेक रेडियोलूसेंट. अच्छा, ठीक. और एपिसेंटर आपको क्या लग रहा है इसका? बॉर्डर्स क्या लग रहे हैं आपको? डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है? बॉर्डर्स आर इररेगुलर, नॉट वेल डिफाइंड. ठीक. और एपिसेंटर क्या लग रहा है आपको? जी सर. एपिसेंटर, सेंटर क्या लग रहा है आपको लीजन का, कि किस रीजन में है सेंटर इसका? सर आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे. सेंटर में आपको क्या लग रहा है कि लीजन अराइज कहाँ से हुआ है? सेंट्रल पॉइंट उसका कहाँ है लीजन का? लाइक अगर लेट्स सपोज ये लीजन है ना, जब भी मैं कर्सर को ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो इसका सेंटर पॉइंट तो ये होगा ना, तो मतलब फिर आप कहोगे ये इट्स अराइजिंग फ्रॉम द रेमस ऑफ द मैंडिबल, मिड पॉइंट ऑफ रेमस. ठीक है ना? आप कह रहे हो कि यहाँ भी कोई लीजन है तो उसका सेंट्रल एपिसेंटर पॉइंट क्या लग रहा है आपको? it could be odontogenic origin from the alveolus. अच्छा, ठीक. ऑलराइट, चलें. इस तरह है कि लग रहा है. सॉरी सर, ओरिजिन ऊपर से यानी कि एल्वोलस वाली साइड से लोअर बॉर्डर की तरफ एक्सटेंशन जा रही है उसकी. अच्छा, ठीक है, फाइन. ऑलराइट. अच्छा, तो बेसिकली इस ओपीजी की डिस्क्रिप्शन में I think it is also involving it is also extending to the right side towards the lower border. ठीक. Causing resorption of lower border towards the right side. ठीक है, ठीक है. ओके, तो इस तरह है बेसिकली कि अगर आप दोनों साइड्स ऑफ द मैंडिबल को कंपेयर कर लो, तो इस साइड पे जो बोन की अपीयरेंस है और इस साइड पे बोन की ट्रेबिकुली की अपीयरेंस है, तो इसमें आपको फर्क नजर आएगा. ठीक है, यहाँ जो है ट्रेबिकुली में आपको थोड़ा स्पेसेस ज्यादा नजर आएंगी, इस एरिया पे आपको जरा डेंसिटी जरा ज्यादा नजर आएगी. ठीक है, दिस अपीयर्स टू बी मोर रेडियोपेक देन दिस साइड. ठीक है, तो मैंडिबल को अगर आप दोनों साइड्स पे कंपेयर करें तो ये साइड रिलेटिवली फिर भी नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये इतनी नॉर्मल नहीं लग रही है. ठीक है, सो इससे आपने बेसिकली पिक करना था कि लीजन एक्चुअली है कहाँ. लेकिन डॉक्टर साहब की बात ठीक है, लीजन हैज एक्चुअली क्रॉस्ड मिडलाइन, इसने क्रॉस किया हुआ है. लीजन मैं भी आपको कर्सर के साथ मार्क करके दे देता हूँ. लीजन जो है इट हैज ऑलमोस्ट इन्वॉल्व्ड द होल मैंडिबल ऑल द वे अप टिल हियर. ठीक है,
So in describing this lesion, first of all, I told you आपने site बतानी है, तो site आपने बता दी कि it is quite possibly extending from the parasymphysis region of one side to almost the parasymphysis region of the other side. ठीक है, तो जी सर। ये आपने site बता दी, इसकी boundaries जब आपने mention करी दी है कि superiorly it is involving the teeth, inferiorly it has involved the inferior cortex, तो इससे रफ बाउंड्रीज भी पता लग गई हैं, तो आप उसका साइज भी बता चुके हो लीजन का। ठीक है, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू मेजर इट क्योंकि ओपीजी पे मैग्निफिकेशन होती है, तो यू जस्ट कमेंट कि इसकी सुपीरियर बाउंड्री कहाँ है, इंफीरियर बाउंड्री कहाँ है, मीडियल बाउंड्री कहाँ है, लैटरल बाउंड्री कहाँ है। ठीक है, तो इससे आपकी वो बाउंड्रीज वाली बात भी जो है वो कवर हो जाती है। ठीक है, तीसरा फिर आपने आना है शेप के ऊपर, या इसकी ये इज इट मल्टीलोक्यूलेटेड लीजन है, इज इट अ सॉलिड लीजन है, इरेगुलर मार्जिन्स हैं, राउंड है, ओवल है, क्या है। तो इस पे सिंस इट्स अ पोरली डिफाइंड लीजन, तो यू कांट रियली डिस्क्राइब एनी शेप टू इट। ठीक है, इसमें रेडियोल्यूसेंसी नहीं है कि आप इसको कहो कि ये यूनिलॉक्यूलर है या ये मल्टीलॉक्यूलर लीजन है, तो वो चीज़ इस पे एज सच आप अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, boundaries, because they are ill defined, so you can't really comment on the boundaries, the outline of this lesion के कहाँ से कहाँ तक है exactly, but if I had to guess I would probably say जहाँ ये increased thickness of the mandible आपको नजर आ रही है ना, increased radiopacity, so this is probably body region तक और almost angle region तक है। So body region of the right side से लेके almost ये parasymphysis region of the लेफ्ट साइड, उस तक आपकी यहाँ लीजन मौजूद है। ठीक है, सो ये इसकी बाउंड्रीज हैं। इसके अलावा फिर आपने इसके डेंसिटी के ऊपर कमेंट करना है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें आपको डेंसिटी जो है ज्यादा नजर आ रही है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग मैंडिबल। सो यू विल से कि दैट हैज इंक्रीज्ड रेडियोपेसिटी है with decreased trabecular spaces on the right side, and there is somewhat of a moth-eaten appearance of the mandible, especially with some heterogeneous areas at the inferior border. ठीक है, यहाँ आप देख लें एक heterogeneous area है, एक यहाँ देख लें, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, one area over here, one area over here, one area over here. ठीक है, so it's not homogeneously radiopaque, it's basically a mixed lesion है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर आपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर कमेंट करना था। तो एज यू कैन सी देयर इज नो टूथ डिस्प्लेसमेंट एज सच नहीं है, एज सच रिजॉर्प्शन नहीं है। ठीक है, लैमिना ड्यूरा के ऊपर आप कमेंट करते हो या पीडियल स्पेस के ऊपर कमेंट करते हो, तो इस साइड पे देख लें तो कैनाइन के एरिया जो है डिस्टल साइड पे देयर इज नो लैमिना ड्यूरा एज सच ओवर हियर। देयर इज वाइडनिंग ऑफ द पीडियल स्पेस इन द premolar as well as the canine। एंटीरियर जो है वो ज्यादा फोकस में नहीं आए हुए, लेकिन यहाँ आप देख लें इस साइड पे लैटरल इंसाइजर में भी पीडियल वाइडनिंग along with loss of lamina dura है, सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। ठीक है, अच्छा, फिर आपने कमेंट करना है ऑन द आईडी। तो इस साइड पे आप देख लें आईडी जो है वो आपको क्लियरली नजर आ रही है, यहाँ पे मेंटल फोरामेन क्लियरली पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आपको आईडी नजर आ रही है, मेंटल फोरामेन आपको क्लियरली नजर आ रहा है। सो वाइटल स्ट्रक्चर्स पे एज सच देयर डजंट अपीयर टू बी एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चेकलिस्ट मैंने आपको इस पे अप्लाई करके दिखा दी है। ठीक है, सो आप एट द बैक ऑफ योर माइंड आप लोगों के ख्याल में व्हाट रीजन कैन दिस बी बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू? Yeah, what would be your differential diagnosis में क्या वो होंगी, because that is the next question that you will be asked when you are presented with such a via such a station. Osteopetrosis, DDs में सर osteopetrosis आ सकता है, और अच्छा, cementosseous dysplasia like would be florid type। उसमें होती है PDL widening या loss of lamina dura होता है इन दोनों conditions में? Osteopetrosis में तो loss of lamina dura and PDL widening होती है उसमें?
एक फाइब्रोसिस का भी आया है मेरे पास आंसर, बट अगेन वही बात, इफ इट इज फाइब्रोसिस लीजन अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसमें टूथ रिलेटेड चेंजेस अमूमन नहीं होती. Yes, Dr. Sakba has given us the correct answer. Basically, this is a case of chronic osteomyelitis. ठीक है. देखें, जब मैं आपको दांतों की तरफ पॉइंट कर रहा था तो आपको उससे अंदाजा हो जाना चाहिए था. I was trying to push you guys towards an infectious cause. ठीक है. तो osteomyelitis में you will come across such a moth-eaten appearance of the mandible. उसमें new bone formation भी होगी, increased radial density of that bone होगी उसमें. ठीक है. एंड इसमें टीथ में जो इस एरिया में इन्वॉल्व होंगे उनकी पीडीएल वाइडनिंग भी होगी. ठीक है. ये आपको, ये बाकी जो आपने ट्यूमर्स बताए ना, उनमें अक्सर ये आपको देखने को नहीं मिलता. ठीक है. सो दिस इज द रीजन व्हाई एक्चुअली यू डिस्क्राइब्ड इट, इवन दो यूजुअली मुझे पता है मोस्ट पीपल प्रॉब्ली वुड नॉट हैव डिस्क्राइब्ड इट. आप लोग सिर्फ रीजन पे कमेंट करते, बट द रीजन आई डिस्क्राइब्ड इट वाज कि आप लोग थोड़े इन्फेक्शियस कॉज की तरफ भी चले जाएं. ठीक है. This is basically a case of chronic osteomyelitis. अच्छा, डॉक्टर फैसल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि what would be the difference between osteonecrosis and osteomyelitis in an OPG? जी, participants, any of you would like to think about this question? No radiological difference, but it depends on the patient history. Clinical diagnosis is important. Clinical वो ज़्यादा होगी. Basically, जब आपके पास in a way osteonecrosis is in a way a part of osteomyelitis, लेकिन इसके ऊपर अभी जब superimposed फिर infection हो जाएगी तो तब शायद आप इसको maybe वो consider कर लोगे. लेकिन the etiology is more important, and वो again बात फिर आपकी clinical साइन, सिम्टम्स और हिस्ट्री के ऊपर आ जाती है. तो रेडियोलॉजिकली स्पीकिंग इन दोनों के दरमियान आपको एज सच जो है डिफरेंस नहीं मिलेगा उसमें, ऑस्टियोनेक्रोसिस में और ऑस्टियोमाइलिटिस में. डिफरेंशिएशन आप करोगे दैट विल बी बेसिकली बी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. अब लाइक एक पेशेंट है, उसने बिस्फॉस्फोनेट दी है, तो उसमें आप फिर ऑब्वियसली आपका दिमाग ज्यादा ऑस्टियोनेक्रोसिस की तरफ जाएगा रादर देन osteomyelitis में. ठीक है. या अगर यही अपीयरेंस होती है और इसमें पेशेंट डज नॉट गिव यू हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकेशन व्हिच कैन कॉज ऑस्टियोनेक्रोसिस, तो फिर आपका दिमाग जो है वो ज्यादा ऑस्टियोमाइलिटिस की तरफ चला जाएगा. ठीक है. या लेट्स सपोज पेशेंट डायबिटिक है, तो यू नो डायबिटिक्स में अक्सर ऑस्टियोमाइलिटिस जो है वो ज्यादा कॉमन, एंड दैट इज नॉट द कॉज फॉर ऑस्टियोनेक्रोसिस. ठीक है. So it's more of a clinical and history based differentiation, and उस पे radiological at least to my knowledge नहीं है, but still अगर मुझे इस पे कुछ मिला तो I will definitely share it in the group. ठीक है. Okay, so अच्छा चलें. अच्छा, एक और क्वेश्चन भी इस पे है कि हाउ कैन वी एक्सक्लूड द मैलिग्नेंट एस्पेक्ट ऑन दिस ओपीजी. मैलिग्नेंट एस्पेक्ट अगेन आप रेडियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं कर सकते. अगेन इट वुड बी मोर ऑफ क्या कहते हैं, वो भी हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे होगी कि ये कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है. तो शॉर्ट ड्यूरेशन अगर होगी ऑफ द कंप्लेंट, रैपिड ग्रोथ अगर होगी, अदर फैक्टर्स आपने एक्सक्लूड कर लिए लाइक सिस्टेमिक स्टेटस जो है वो ठीक है, कोई मेडिकेशंस नहीं इस्तेमाल कर रहा विच आर केपेबल ऑफ कॉजिंग ऑस्टियोनेक्रोसिस, तो प्रॉब्ली फिर शायद आपका दिमाग जो है दैट माइट गो ऑन टुवर्ड्स द मैलिग्नेंट एस्पेक्ट. लेकिन ओपीजी पे इस पे एज सच शायद आप वो नहीं कर पाओगे, एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे मैलिग्नेंसी. हाँ, एक एस्पेक्ट अलबत्ता ये आप कह सकते हो कि इफ इट वाज बोनी ट्यूमर है, तो बोनी ट्यूमर अगर वो हो तो वो यूजुअली स्टार्ट में दे आर यूजुअली रेडियोल्यूसेंट. बाद में जब वो न्यू बोन फॉर्मेशन वो करते हैं ना, लाइक ऑस्टियोसार्कोमास हैं which will form that sunburst appearance type, वो अगर फॉर्म करेंगे
तो वो थोड़ा बाद में बनाते हैं malignant tumors. So start में you will probably be dealing with a more radiolucent picture if it was malignant. लेकिन ये क्योंकि mixed picture है तो probably शायद आप कह सको या तो ये long standing malignancy है लेकिन at least maybe शायद ये early stage malignancy शायद ना हो because you're still seeing quite a lot of the bone. ठीक है? So probably that might be one clue. But again, it won't be very precise in this regard. ठीक है? All right. चलें. Next हमारे पास कौन है? I think Dr. Sonia ने अभी वो किया था तो चलें जी. Dr. Ali, are you with us? जी डॉक्टर अली. Sure. Chaleं, we'll move on to the next participant then. जी फैसल. Can you hear me, sir? जी, please. This is OPG of a patient. Name is not mentioned and date of exposure and the radiology department is not mentioned. Coming to condyles on both sides appear to be normal, but from the subcondylar region of the right side, there seems to be some lesions starting from there and crossing the midline till the canine of the left side of the mandible. And there also seems a radiolucent line on the right angle of the mandible. It may be, we may suspect a pathological fracture. And the coronoid process is also not clearly visible on the right side. And it is probably a mixed type of lesion, but predominantly it's radio opaque. अच्छा. And there are missing teeth. आपको कहाँ capacity नजर आ रही है lesion की? जरा boundary mark. ये pathological fracture के नीचे जो है यहाँ पर थोड़ी सी radiolucency है सर. जी. यहाँ radiolucency है. अच्छा. Sorry, radio opacity. But it's on both of the side. But it is on both of the side. It's just a line. Yeah? Yes. नहीं. Just the angle से लेके सर ये 6 की region तक ये trigone सा जो है. Yes. अच्छा. ठीक. But this is present, I think, on both of the sides. अच्छा. ये basically ghost image है of the opposite side mandible की. ठीक है? Yes. आप में से किसी in the inferior border session दी है. So I told you कि ghost image जो होती है ना, that is always superior होती है and it is more blurred होती है and it is present on the opposite side. तो इस side पे देख लें, यहाँ भी ये मौजूद है. ठीक है? Ghost image. So यहाँ भी मौजूद. This is the ghost image of the opposite side of the mandible. ठीक है? Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. And the ID canal this is disappeared on the right side, while on the left side it seems to be normal. ठीक है. और and there are the teeth are missing on the right side. That are the molars. Central, lateral canine. Distal to canine, I mean first, second, premolar and molars are missing on the right side. And there also seems the bone resorption is also there on the vertical height of the bone is also decreased on the right side of the mandible. ठीक. अच्छा. And the coronoid process, I also cannot appreciate that as well on the right side of the mandible. ठीक. And on the left side of the mandible, it is normal. सही. अच्छा. ये क्या है आपके ख्याल में?
Sir, I was suspecting that this is the ghost image which is present on both of the side as well. We Ghost can image see it ये on the है, opposite. ghost image ये है, ये नजर आ रहा है, ये जो मैं अभी कर्सर के साथ बिल्कुल। मार्क कर रहा हूँ, this is the बिल्कुल ghost, सर। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये क्या चीज है? So tongue space. जी, this is basically the tongue, ठीक है। इस OPG में एक एरर है, जो मैंने आपको बताया था कि OPG लेते हुए the tongue has to be pressed against the hard palate। तो आप देख लें, हार्ड पैलेट के अगेंस्ट नहीं प्रेस किए तो आपको जैसे यहाँ गौर से देख लें तो आपको लग रहा होगा कि जैसे सारे मैक्सिलरी टीथ में सिस्ट बना हुआ है। ये नजर आ रहा है, इसकी एपिसेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ आपको खुद से वो बता भी रहा है कि भाई मैं पेशेंट ने गलती की है एंड उसने हार्ड पैलेट के अगेंस्ट टंग को नहीं रखा, सो द मैक्सिला अपीयर्स टू बी रेड्यूसेंट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द टंग, Shadow of the tongue. एग्जैक्टली टंग का शैडो है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस का केस है, जिसमें इन्होंने कोरोनॉइड से लेके ये सारा मैंडिबल रिमूव किया हुआ है बिकॉज इसमें ORN डेवलप हो गया था, ठीक है। कॉज आपको यहाँ ऑलरेडी नजर आ रही है, यहाँ मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस हुई हैं व्हिच हैव नॉट हील्ड, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिला में भी एक्सट्रैक्शंस हुए हैं, बट यू नो कि मैक्सिला में ORN इज वेरी अनकॉमन, मैंडिबल में ज्यादा होता है। So these extraction sockets haven't healed and they have caused this huge lesion which has now been removed, ठीक है। So it's a post-op X-ray और इसलिए इसमें आपको कोरोनाइड और बाकी चीजें नहीं नजर आ रही, ठीक है। But the rest of the mandible appears to be somewhat fine in this, ठीक है। तो चलें, nicely described, okay। अच्छा जी, आगे चलते हैं towards चलें ये वाला कर। अच्छा, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? जी नोमान, आर यू विद अस? नोमान, अच्छा चलें, अच्छा फिर चलें इस तरह करते हैं, we only have about 2 minutes left in this meeting, so we are going to let this meeting finish and I'll give you guys about a 5-minute break, कि आप लोग असर पढ़ लें, मैं भी obviously पढ़ूंगा, so then we'll restart. I think we only have a couple of slides left, so after that hopefully the session hoga that should be our last session, ठीक है। So उस तक anybody who wants to take this X-ray, they can take it. You have about 1 minute 30 seconds just to view this, and once we come back after Asr, तो फिर इसकी description आप में से जो भी करना चाहता है वो फिर start कर ले, ठीक है। I'm just going to leave it here for a minute and 20 seconds, and after Asr we'll start its interpretation. Yes, it's about 5:15 now, so by 5:20 inshallah we should restart, ठीक है। तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, खैर है कि when to rejoin, okay। So just have a look at this X-ray and about 5